Hello students, how are you all? So this is your Reena ma'am and today we will do class 10th maths exercise 2.4. We have done question number 1 earlier, so let us do question number 2. And what is given in question number 2? Find the cubic polynomial with the sum of the product of its zeros taken 2 at a time and product of the zeros are given. So which things are given here? एक तो आपको sum given है, दूसरा आपको sum of product of its zeros taken 2 at a time. Okay, and one thing is given ki product of zeros given hai. So let us see how to do this question. So let us take zeros of these. The required polynomial is alpha beta gamma. So according to the question, alpha b plus beta plus gamma is 2, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha equal to -7 and alpha beta gamma is equal to -14. Then how to find out px? तो हम अब px कैसे हम इसके लिए find करेंगे? So we can say that px is equal to कैसा polynomial है ये? Cubic polynomial. Okay, then minus, here we will write sum of the zeros and that is 2. So minus 2x square then plus -7 into x. Okay, second number पे क्या आएगा? Second number पे आएगा sum of the product of zeros taken 2 at a time and then again minus alpha beta gamma, that is minus 14. So our answer will be px equal to x cube minus 2x square minus 7x and plus 14. So this is our answer. जैसे हमारा स्क्वायर पॉलिनोमियल में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम क्या लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस पी सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो यहाँ क्यूबिक के लिए हमें क्या लिखना होगा? हमें लिखना होगा एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर देन प्लस सम ऑफ द जीरोस ऑफ कंसिक्यूटिव यानी कि एस सी 2 कंसिक्यूटिव एक साथ लेंगे इनटू एक्स एंड देन माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ओके, so SC is here alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. So this is question number 2. Let us do the next question, that is question number 3. So here we have question number 3 and what is given in question number 3? Yes, we have if a zeros of polynomial, कौन सा polynomial है? This is a polynomial आर ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी. ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो ये कैसा पॉलिनोमियल है. ये है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हमें गिवन है एंड देन दे आर सेइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. So first of all let us write down the polynomial. What is the polynomial given here? Px equal to x cube. Yes, we have x cube minus 3x square plus x plus 1. Okay, this is a polynomial and we can say that coefficients, if we compare it with the generic form, compare it with ax cube plus bx square plus cx plus d, then we can say that a is equal to 1, b equal to minus 3, c is equal to 1 and d is equal to, yes, d will be equal to again 1. So although यहाँ पे हमें जो zeros given है वो भी a and b की form में given है. So let us take here a dash and b dash. Okay, this is a dash and this is b dash. Fine. So अब यहाँ पे क्या given है कि if alpha and beta, if alpha, we can say that if alpha, beta, gamma are the zeros
अगर अल्फा बीटा गामा इसके जीरोज हैं, then what happen? We can say that कि sum of the zeros अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए. And here alpha beta gamma means a minus b, a and a plus b. So we can say that a minus b plus a and plus a plus b is equal to minus b dash is minus 3 upon a. A is 1. So we can write this a will be cancelled out from here. Yes, a will be cancelled out from here. Sorry. B will be cancelled out from here. Then we get a plus a, that is 3a is equal to minus plus equal to 3. Then value of a will be 3 upon 3. So this implies a is equal to 1. So here we get value of a equal to 1. Now come to the next part. If we take alpha beta gamma, अगर हम alpha beta gamma की वैल्यू लें तो वो किसके इक्वल होगी? यस, वी कैन से दैट अल्फा बीटा गामा फॉर द क्वेश्चन विल बी माइनस डी अपॉन ए. So this 0 will taken as alpha, second one is taken as beta, and third one is taken as gamma. So we can say that alpha can be taken as a minus b, beta can be taken as a, and gamma can be taken as a plus b. So we can write here a minus b into a plus b is equal to minus d. So d was equal to 1 and a was equal to again 1. So minus d upon a will be minus 1 by 1. So as we find the value of a, put, okay, just wait. Once we multiply these two, अगर हम इन दोनों को multiply करें, so it will be a square minus b square into a, and that is equal to minus 1. So here if we put a is equal to 1, क्योंकि a की वैल्यू हमने कितनी अभी ली थी? 1 आई थी. So it will be 1 minus b square into 1 and equal to minus 1. So it can be written as 1 minus b square is equal to minus 1. See, now 1, this b square can be taken as 1 plus 1. ठीक है, b स्क्वायर को हमने इस तरफ शिफ्ट किया, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये 1 इधर जाके प्लस हो गया, तो 1 plus 1. So b square is equal to 2, or we can say that b is equal to plus minus root 2. So here we have value of a is 1 only, but value of b will be 2 values of b we have here. So which 2 values of b we have? Plus minus root 2. It should be plus root 2 as well as minus root 2. So this is our question number 3. Now let us see what is given in the next question. So here we have question number 4. अब question number 4 में जो हमें given है ना, वो ऐसा हम already question कर चुके हैं. So that will help you a lot. ठीक है, तो let us start with this question. What is given here? हम मान लेते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है ना, हम इसको px लेट कर लेते हैं. Let px equal to this polynomial. So what we can write? We can write here कि ये जो px की जो वैल्यू है, मीन्स यहाँ पे जो x है that is equal to 2 plus minus root 3. ये हमें given है कि x की वैल्यू ये हो सकती हैं. Then I can say कि x equal to 2 plus root 3 as well as it can be equal to same time 2 minus root 3. So if I take these two here, then I can say x minus 2 plus root 3 equal to 0 and x minus 2 minus root 3 equal to 0. So once I multiply these two, what I will get? If I multiply these two, then I will get x minus 2 minus root 3 multiply by x minus 2 plus root 3, okay, and that will be equal to x minus 2 whole square minus root 3 square. Okay, then how can we write it? We can write it as x square minus 4x plus 4 and root 3 का square क्या होगा?
minus 3. So it will be x square minus 4x plus 1. So now this is very important. जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल आया है, this polynomial is very important because हम इस पॉलिनोमियल के लिए कह सकते हैं yes this polynomial is a factor of px. x square minus 4x plus 1 is a factor of px. अब हमने ये x square minus 4x plus 1 फाइंड कैसे किया, एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं. हाउ वी फाइंड इट? हमने लिया कि x की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 plus root 3 के इक्वल है and 2 minus root 3 के इक्वल है. Then we have taken it as x minus 2 plus root 3 equal to 0, x minus 2 minus root 3 equal to 0, and then we multiply both the equations and we get x minus 2 minus root 3 and x minus 2 plus root 3, and that was a then we form a polynomial x minus 2 square minus root 3 square, that is x square. इसको हमने expand किया x square minus 4x plus 4 and minus 3, then we get x square minus 4x and plus 4. अब हमें इस पॉलिनोमियल से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करके और इसको किस फॉर्म में लिखना है, हमें इसको लिखना है gx into qx की फॉर्म में. Okay, see how we divide it. Once we divide it, then what we need to do, so here we will take x4 फर्स्ट क्वोशंट की टर्म कैसे आएगी बेटा, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है एंड वी विल गेट एक्स स्क्वायर. So this is our first term of the quotient, x square. Now this x square will be multiplied by all these three terms and we will get x square, x raised to power 4, then x square into minus 4x, then we will get minus 4x cube. x square plus 1 से multiply होगा तो plus x square. Now we will change the sign. Once we change the sign, we get minus plus minus, from here it will cancel out. Minus 6 and plus 4 will be minus 2x cube. Minus 26 and minus 1 will be minus 27x square, and then plus 138 will be there. सेकेंड क्वेश्चन की जो हमें सेकेंड टर्म चाहिए क्वेश्चन की, वो कैसे आएगी, दिस माइनस 2x स्क्वायर, सॉरी दिस माइनस 2x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, जो डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है उससे हमें डिवाइड करना है, एंड व्हेन वी डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, yes we get minus 2x. Minus 2x is the second term of quotient, and then this minus 2x will be multiplied by all the three terms. तीनों टर्म से इसको मल्टीप्लाई किया, then we get minus 2x cube, then minus minus plus 4 to the 8x square, and then minus 2x, and here we will change the sign. Okay, let us change the sign now. Plus, and it will cancel out, then minus 27 and minus 8, it will be minus 35x square, then minus 130, plus 138 and minus 2, so it will be plus 133, plus 136 plus 136x, and then last minus 35 will be taken from here. So last term of the quotient will be minus 35. जब हम इसको डिवाइड करेंगे, minus 35x square divided by x square, so we'll get minus 35, and then minus 35 will be multiplied by first term, we will get minus 35x square. Once is divided by second term, then there will be, then we get I have to change the sign of the 2x. Once I changed it, then I get 140x, and here once we change all the sign here, then all these will be cancelled out, and in that case remainder will become 0. Okay, so now here we get two factors here. कौन कौन से दो factors आए हैं हमारे पास? एक factor है हमारे पास, yes, one factor is this x square minus 2x minus 35 and one is this. तो ये तो हमारे पास पहले से ही था x square minus 4x plus 1, है ना.
बट नाउ द न्यू फैक्टर इज दिस वन। तो इस फैक्टर के हमें आगे क्या करने पड़ेंगे, फर्दर इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी एंड देन वी विल पुट इट इक्वल टू 0 एंड देन वी विल गेट द रेस्ट zeros of that. So yes, x square minus 2x minus 35 can be written as, we can say that x square minus 35x and so yes, we can write px as their factors, जो हमने अभी अभी डिवाइड करके दो फैक्टर्स फाइंड किए हैं, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे अब इसके सेकेंड फैक्टर को, वी विल कन्वर्ट इट इनटू टू लीनियर फैक्टर्स। कैसे हम फैक्टर करेंगे इसके, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होगी, 35 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करके 7 आए। तो ऐसे कौन से फैक्टर होंगे, -7 एंड +5x एंड देन व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे, एक फैक्टर यहाँ से कॉमन लेंगे, देन x माइनस 7 रिमेन बिहाइंड, और इन दोनों में से हम 5 कॉमन लेंगे, फिर x माइनस 7 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, so from these two we can say that ki x minus 7 is common and then x plus 5 remains behind. So you know what happened here, these two things are quite same. So if we need to find out the zeros of polynomial, अब मुझे zeros find करने हैं, तो ये तो मुझे already given था, है ना। Now I would like to find other zeros. So to find zeros, what I will do, I will put x minus 7 equal to 0 and this implies x equal to 7. And then I will put x plus 5 equal to 0 and this implies x equal to minus 5. So yes, we can say that 7 and minus 5 are the required zeros. Okay. So with this, we have finished this question number 4, and now only very very important and a complex problem left behind, that is question number 5. So we will do it in our next video. Thank you so much for watching, and those who are watching, please do subscribe this channel. Yes, subscribe and share it with your friends. Press the like button and please push the notification bell so that you will get all the upcoming videos. One more thing, once we done half the syllabus, then we will solve the board question papers. Okay, so thank you so much everyone for watching. Those who are watching it, thank you so much, and then प्रैक्टिस अलॉट योर एनसीईआरटी क्वेश्चंस, क्योंकि आपके जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। So please keep doing practice, keep learning. Thank you so much. Till then, bye bye.